Luck, grit, determination written large on that inning of 89 runs. He becomes the 13th player from India to complete 5,000 runs. In Test, is Ajinkya Rahane the new comeback man, or is this again just a one-off success for him, as has been his story in the past? This and more in today's episode. 1, 2, 3, 4. Hi, I'm Bhumit Majmudar, and with me are Bhavik Bhai and Sanket Bhai. Welcome to Behind the Wickets. And what are your thoughts for day three? How has it been for us? Good morning, Bhumit. Good morning, Bhavik. As per your intro line, Rahane has been the comeback man, and what a comeback it is. Not only in the IPL, he is proving his mettle in the Test arena as well. And with all the luck he had yesterday, with all the catches that were dropped, he got out LBW on a no ball. But man, with all the luck that you have, you need to capitalize it on it as well, right? And he did the exact same thing. 89 runs at a very fair pace, though he ended the second day with a low strike rate, but he made all of it in the third day. Bhavik? Yeah, and what a company he had with in Lord Shardul Thakur, and he just like Steve Smith, Thakur also seems to have the liking for the oval. This is his third half century on the ground, and what a partnership, and what a story for Rahane. But to call him a comeback man, well, I don't know. Maybe it's just one innings. Hopefully, he delivers even better in the second innings whenever India bat. But when they were going along at the lunchtime, I mean, I just wish that partnership carried on for another hour or so. He deserved 100. I believe, and I was actually cursing the analyst in between, Sanjay Manjrekar and the other guy on Greek Info, where they were saying it will be a great story if he scores 100. I said, don't jinx him. Don't jinx him, please. Let him just play. There were a And billion other people with you there. I know. I praying don't for want a to take the century. names. I don't want to take those names. And a But billion other people who were analysts as well. Jinxing the yeah, jinx. yeah, jinxing the jinx. And he was jinxed, unfortunately, and got out on 89. Otherwise, what would have been probably his greatest 100 alongside Lords and Melbourne. But that was not to be. And again, when Australia lost two early wickets in their second innings, that was a time where India could have further made inroads, but unfortunately, Steve Smith and Debushang had a good partnership there. But all in all, I would say this was probably the only day where Indian fans had many things to cheer about. And there were phases where we felt कि हम लोग वापस आ सके मैच में. And if you look at that Rahane innings, अगर हम पूरी इनिंग देखें ना, तो हमने रहाणे के इंटरनेशनल करियर के सारे फेस देख लिए एक इनिंग में. वहां पे ऐसे भी बॉल्स थे जहाँ पे रहाणे क्रीज में खड़े खड़े बिना कोई फुटवर्क के सिर्फ हाथ फेंक रहे थे, बैट फेंक रहे थे बॉल की तरफ. लकीली सर्वाइव हो गए, कोई भी एज नहीं लगी. ऐसे भी बॉल्स है जहाँ पे इन स्विंगिंग डिलीवरी में कोई फुटवर्क नहीं था, एलबीडब्ल्यू आउट भी दिए गए, बट देन अगेन देयर वाज लक अटैच देयर. दोनों नो बॉल्स हो गए पैट कमिंस के. एंड देन देयर वर बॉल्स जहाँ पे उनका वो ओरिजिनल फ्लेयर भी दिखा, जहाँ पे वेरी इजीली वाज जस्ट टाइमिंग द बॉल एंड करेसिंग इट थ्रू द गैप्स. तो ये एक ऐसी इनिंग थी जहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट मैचेस में ऑफ कोर्स आपको कोई भी 100% एक टाइप की इनिंग नहीं देखने मिलती, क्योंकि इनिंग्स ही इतनी लंबी होती है कि आपको फ्लॉज भी दिखेंगे और साथ में जो उनकी परफेक्शंस है वो भी दिखेंगी. But this was a vintage Rahane of sorts that we saw, or is this, or did you see something that he has changed? Bhumit, I feel this is all thanks to the confidence that he has got from the IPL stint that he had with CSK. And mind you, he wasn't a part of a regular 11 till the last season. And
MS Dhoni and the CSK management have assured that he came back to form, and with the form that he has come back in, with the confidence that he has, he came back to the Indian team as well. Yeah. And the strokes that he played yesterday were oozing confidence. Hmm. He brought up his 50 with a six to a pull of and Cummins. Hmm. It showed that see, IPL is behind him, right? And all the confidence. I mean, all the shots that he played, they were oozing with confidence, and he got out on I would say a blinder. But even that shot that he played was a cut of confidence. It would have been otherwise a four written on it, but not to be. And then I there would was just other like to batsmen. add, Yeah. Go on, Bhavik. just like to add his domestic season also. He scored some 600-700 runs in the domestic circuit in India before IPL. I think that must have played a big role also. And I think Rahane has always been a good player of the backwood. If at all he has had some challenges, that those early phase of the innings, that's where he struggles on the front foot. Right. So off the back foot, he's always comfortable. He's always somebody who's comfortable staying on his back foot and playing the on the square of the wicket, either cut shots or the pulls and hooks. So that's probably always been there. I think maybe what might have also happened is कि वो थोड़ा अभी worst phase तो देख लिया है. He has been dropped. ये भी शायद पता है कि ये कोई लंबा अपॉर्चुनिटी नहीं होगा. ये हो सकता है कि ये वन ऑफ टेस्ट हो या एक दो और मैच खेलने को मिले. तो शायद रिलैक्स होके खेल रहे हैं, वो भी एक फैक्टर हो सकता है. जो मेंटल चीज बोलते हैं एक्सपर्ट्स हमेशा. And then दूसरे एंड पे there was other batter, bruised and battered शार्दुल ठाकुर. दोनों हाथ में आर्म गार्ड पहन लिए थे एक टाइम पे. And but he stood there. काफी बॉल्स खाए बॉडी पे, but he stood there. He scored runs और काफी अच्छी पार्टनरशिप बनाई अजिंक्य रहाणे के साथ, which actually saved the face for India. Yes, yes. See, Rahane not only was dropped from the Indian team, he was robbed of his BCCI annual contract as well. Yeah. So now coming into this test match and performing like this, it will give him some extra level of confidence. Yes, Shardul Thakur, he is in an elite company now with Don Bradman and Alan Border. Those two batsmen have ensured that at Oval they have consecutive 3 half centuries, and Lord joining them is a big thing over there. Shardul, for him, Oval is the ground that he prefers batting. He has performed there against England and now it's Australia. We know how he bowls. Let's hope that he just delivers some good overs today. And I'm sure with the ball now turning, the pitch getting into the 4th day and 5th day, it would be difficult scoring runs. But because we saw some of the deliveries that were delivered by Jadeja yesterday, I think India just missed the trick of leaving out Ashwin. What do you say, Bhuman? Yeah, I mean they should have played Ashwin, right? Yeah. Well, that's a story of past now. We've been discussing that since day one, but now this is the 11 that we have. And of course, on day 3 we saw signs. अगर अश्विन होते तो कुछ घमासान हो सकता था डे 4-5 जब अभी ये लोग बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि नेथन लायन के बॉल टर्न कर रहे थे. रविंद्र जडेजा ने काफी अच्छी बॉलिंग की, टर्निंग काफी टर्न हो रहा था उनका भी. और इसी टर्न में उन्होंने वी आल्सो सॉ ब्रेन फेड मूवमेंट once again from Steve Smith in test matches. यहाँ पे वो काफी अच्छा खेल रहे थे. He was middling everything, going according to the plan, and suddenly out of the blue he goes out of the crease looking to hoik Jadeja over his head and giving not an easy but a good enough catch to Lord Shardul. बट जडेजा ने बहुत बार आउट किया है स्टीव स्मिथ को. तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था फर्स्ट इनिंग्स में भी कि वो जानबूझ के थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव उसको अपनी he was trying to put off Jadeja from his routine length and line.
तो वो कोशिश में सेकेंड इनिंग में थोड़ा ज्यादा हो गया, एंड जडेजा वाज प्रोबेबली स्मार्ट इनफ टू होल्ड इट मे बी अ टच स्लोअर, grip slightly off the surface, so that played a role. तो शायद ओवर एग्रेशन, बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का कल पता नहीं, they were not द सेम ऑस्ट्रेलियन टीम जो पहले 2 दिन खेल रही। बॉलिंग में भी आप देखो, फर्स्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो मिस्ड अ ट्रिक, नेथन लायन लास्ट में आए, मतलब जस्ट बिफोर लंच, और आई थिंक स्कॉट बॉलैंड ने भी उतने ओवर्स नहीं डाले कंपैरेटिवली। क्यूमिंस जो नॉर्मली बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने इसमें, वो नो बॉल डाल रहे थे, कैचेस छूट रहे थे, विच इज वेरी अनयूजुअल फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए कल का दिन वाज वेरी इंडियन लाइक। मे बी लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, जो हमने पहले दिन पे भी बात की थी। ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है काफी कम मैचेस खेल के आ रही है फाइनल में। दे हैव लॉट ऑफ प्लेयर्स हु हैव रेस्टेड अ लॉट, नेट्स किए होंगे, बट देन डे वन उनकी बैटिंग थी, इतना एफर्ट लगा नहीं उनको। डे टू पे जब उन्होंने इतना बॉलिंग किया तब जाके बॉलर्स को भी पता चला होगा डे थ्री पे कि कितना हम स्टिफ है, बॉडी स्टिफ होगा, उतना इजी Right. मूवमेंट्स नहीं हो रहे होंगे, एंड दैट इज समथिंग व्हाट वी सॉ प्रोबेबली ऑन डे थ्री। or has the wicket just eased out for batting now? Now, though India we feel has made a comeback, थोड़े से गेम में आ गए हैं, हमें फील हो रहा है, but the first inning total of Australia is going to haunt us, because we actually did not take advantage of the overcast conditions on first day, fresh wicket, and I feel इंडिया ने कमबैक अच्छा किया है, एंड आई एम श्योर के ऑस्ट्रेलिया वुड नाउ स्ट्रगल स्कोरिंग एट अ हाई पेस, बिकॉज दे हैव ग्रीन हु इज देयर, हेड ऑलरेडी आउट हो गए हैं, हु कुड हैव गिवन देम दैट फ्लाइंग, और वो बोलते हैं ना एक, we know how head played in the first innings, or he started actually showing the same form in the second innings, but thanks to Jadeja आउट हो गए। नाउ आई फील के फोर्थ इनिंग्स में सी इंडिया वुड बी एक्सपेक्टिंग नॉट मोर देन 400 टू चेज, बट इवन चेजिंग मोर देन फर्स्ट इनिंग्स में हमने 300 क्रॉस नहीं किए हैं, तो सेकंड इनिंग में to score somewhere around 400, that is what we are hoping, Indian bowlers would restrict Australian batting to that. They are already 296 ahead at the moment, right? 295. 295, yeah. So ideally they should be bowling out Australia within, say, not more than 100 runs. जितने कम हो सके उतना अच्छा है, because the more they score, the more you will be chasing in the fourth innings. तो भूमित, अगर आप रोहित शर्मा हो तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी फर्स्ट सेशन में? फर्स्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया को डिक्लेयर करवा देंगे। हाँ, मैं वो तो तो रोहित कहूँगा शर्मा नहीं कर सकता ना, वो तो क्यूमिंस को करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बट जैसे विकेट दिख रहा है ना, कल जडेजा ने ट्रबल तो किया है। आई वुड ऑब्वियसली स्टार्ट विद शमी एंड सिराज, क्योंकि वही दो आपके प्रीमियम पेसर्स हैं। यू वांट टू गेट लबुशेन अर्ली एटलीस्ट। ग्रीन भी मतलब काफी अच्छे बैट्समैन नहीं उनके, भले फर्स्ट इनिंग में नहीं चले, बट ही हैज स्कोर्ड इन पास्ट। So what Sanket bhai said is right. I'd agree with that. We need to get them in 100. So अभी चैलेंज रोहित शर्मा के लिए क्या है कि क्योंकि उनका फर्स्ट इनिंग का टोटल इतना बड़ा है, उनको विकेट्स तो लेने ही पड़ेंगे, बट साथ में रन्स भी नहीं देना है, विच इज अ ह्यूज Right. चैलेंज इन टेस्ट मैच। कि आप या तो आप विकेट्स के लिए जाएंगे या तो आप चोक करेंगे ओपोजिशन को, दोनों एक साथ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर चोक करना है तो फिर दैट बिकम्स अ वेटिंग गेम फॉर यू, कि हम चोक करते रहे, विल लेट द प्रेशर गेट टू opposition एंड वेट फॉर एज एंड व्हेन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ विकेट। पर अभी यहाँ पे वो कर सकते हैं क्योंकि अभी 2 दिन पूरे बचे हुए हैं, और अगर बारिश हो गई तो एक रिजर्व डे भी है। तो आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी अ गुड स्ट्रेटेजी कि ऑस्ट्रेलिया को रन्स ना दे उनको, जो नेक्स्ट व्हाट वी आर लुकिंग टू गेट देम आउट फॉर नेक्स्ट 100 ऑट, उनको 1.5 सेशन जितना खिंचाए वो 100 रन करने के लिए। एक सेशन में 100 रन दे दिए तो देन अगेन वी आर ऑन द बैक फुट, भले फिर विकेट्स भी आ रहे हैं, बिकॉज उतना टाइम रहेगा ऑस्ट्रेलिया के पास भी हमको ऑल आउट करने का। सो अभी यहाँ पे these things, there are two things that we need to balance out at this moment, and it's a very tricky situation to be in.
And for that they'll have to pick Green and Carey in successive overs, or say as soon as possible, because these two guys are playing at a faster pace as compared to Labuschagne. So concentrate on how to get out Chris Green and Cameron Green, sorry, and Carey. और अगर आप पैट की में ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अगर मैं बैट एंड बैट, मेरी वो बात मानेंगे तो मैं तो कहूंगा डिक्लेयर कर दो अभी, क्या करेंगे और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। बट अभी 2 दिन बचे हैं। हाँ, इसलिए तभी तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा ना। नहीं, मुझे लगता है कि आई जस्ट सेंस समहाउ, और मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया पिछले कुछ प्रेडिक्शंस एकदम एक्यूरेट हुए तो। संकेत भाई नहीं, संकेत वाज नॉट बिलीविंग मी व्हेन आई सेड के कल दिन खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट गिर जाएगी, और वो गिर गई। तो अगर मेरी बात मान रहे हैं ऊपर वाले, तो आई वुड से ऑस्ट्रेलिया लंच से पहले ऑल आउट हो जाए। ओके। और And India should be India should be chasing. I think no, on a realistic ground, I think India will be chasing around the same target जो हमने ब्रिस्बेन में चेस किया था, 380 390 के बीच में कुछ आएगा टारगेट, ऐसा मुझे लग रहा है अभी on a realistic note. कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अभी नहीं बता रहे हमने, मुझे नहीं मालूम. I'm very nervous. The only difference there was we had Rishabh Pant in our batting lineup. No, we had Shubman Gill also. He scored a big 90 there. Yes. I'm talking about the difference. But Similarity Shubman Gill to डिफरेंस तो काफी है। रोहित शर्मा कैप्टन हो गए, विराट कोहली खेल रहे। No, Virat Kohli was not there in that team. वही बोल रहा हूँ, वो सब डिफरेंस में आ गया अभी। I don't know if that's a positive difference or not, but historically talking, पिछले एक समर में हमने जो भी देखा है इंग्लैंड में, हम भी even when India traveled, relatively फोर्थ इनिंग इजी रही है इंग्लैंड में खेलना in a lot of matches. इनफैक्ट ये बास बॉल स्ट्रेटजी भी जो आई है, दैट हैज बीन लार्जली बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि फोर्थ इनिंग में इंग्लैंड काफी इजी रही, बैटिंग करना इजी रहा इंग्लैंड में, एंड दे हैव बीन चेजिंग दीज 320s 400 रन्स वेरी इजीली इन जस्ट ओवर अ डे और सो. तो I don't know, there could be a match on our hand if we are chasing anything below 400. Absolutely. मैं ये भी बताऊं, I mean just to add to that, अगर पिछले 3 साल में वो ज्यादा देखने को, ऑफ कोर्स ज्यादातर पीरियड में विराट कोहली वाज द कैप्टन, बट उस वक्त या इवन आफ्टर दैट पिछले 2-3 सालों में what we have seen consistently with this Indian team is whenever they've been pushed to corner, they've come back stronger. So let us just hope that second inning we really show up a fight. I think fans were disappointed after first inning के बाद memes आना शुरू हो गए थे, वो सब हो गया था शुरू सेकंड डे का दिन खत्म होते होते, because there was no resilience, there was no fight which was seen. As long as fans we get to see कि हमारी team they are putting in all that the might that they have, तो मेरे ख्याल से fans, that's what the fans want, a contest. So let us hope we have a contest on our hands by the end of the day 3-4. Predictions quickly. Day 4, I think I agree. We'll be chasing somewhere around 400, and by the end of day 4, I think we should be 3 odd wickets down. Oh, okay. That's too many wickets gone, and if 3 wickets you are telling, then we are losing our 2 openers at least. I'm banking on the top 4 to make sure my predictions are right. But in case you want to win, वो तो वैसे भी शार्दुल और जडेजा को ही करना है नीचे, अब ऊपर वाले तो जिताएंगे नहीं. एटलीस्ट वो नया बॉल खेल ले तो भी काफी है, नीचे वालों को उतना तो इजी रहेगा खेलना. फिर high time our top order contributes to some win in the test now, because it has been a long time the top order hasn't been performing and is under scrutiny from the fans, of course, not from the management, because we are seeing the same top order for a long time, and they are playing on reputation is what I feel.
Now let their reputation turn out in a good form, and they be the savior of Indian Test. Let's hope. My prediction would be yes, we will be chasing somewhere around 400, and will be one down with around 150. Wow, कौन होगी वो that's विकेट? unusual. गिलिया That's रोहित. unusual. अभी उतना डिटेल में मत जाओ यार. We'll have to stay positive, right? So it's a very bold Okay. prediction, yes, but Yeah, it is. that's what we all hope and wish happens. I would say So that all the fans are glued to the TV on the 5th and the final day. Otherwise, the 5th day would be boring. yeah. So I think Australia will bat midway to the second session, and India will be batting before tea. And I don't want to say what India's score will be by the end of the day. I don't know. I'm just keeping that open. So Let's how see. much will be chasing? उतना तो बोलो. वो तो बताया ना 380, 390 के आसपास. 400 Okay. odd, right? Okay. And believe me, in the second innings, fingers crossed, if India happen to have a decent start, Australia will be worried. Australia will be worried, Yes. without a doubt. And with that, I think we are good to wrap this talk up. For the viewers, don't forget to put your predictions in the comment box. We'd love to read them. और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. यू नो द ड्रिल. के बाद में एक बेल का आइकन होगा, उसको भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारा कोई नया वीडियो लाइव आए. और हर बार आपको वो एंग्जाइटी ना रहे यूट्यूब में जाके कह रहे वीडियो आया कि नहीं, वीडियो आया कि नहीं. ये हमारे फेथफुल फॉलोअर्स के लिए जिनको एंग्जाइटी रहती है. And I think that's it from us today. We'll be back tomorrow, hopefully with a lot of good news and smiling faces, and India inching closer to that target. 1, 2,